Hello bachcho, my name is Amit and today again I am coming with the new sample paper. I am going to discuss the entire sample paper. एक already हमने कर लिया होगा, पहले हमने कर लिया था और एक हम sample paper अभी discuss करने वाले हैं. So let's start with the first question. ये NPO का question है. Income and Expenditure Account reveals Income and Expenditure Account reveals सरप्लस और डेफिशिएंसी, नेट प्रॉफिट, कैश इन हैंड और कैपिटल अकाउंट. तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत बच्चे सिंपल है. इसका आंसर क्या है? सरप्लस एंड डेफिशिएंसी, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपके पीएनएल अकाउंट में आता है, कैश इन हैंड ये बेसिकली रिसीट्स एंड पेमेंट का पार्ट है और कैपिटल अकाउंट भी लायबिलिटीज का पार्ट है. सरप्लस एंड डेफिशिएंसी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर्स बाय अ नॉन profit organization is shown in which of the following? First option, debit side of income and expenditure account, credit side of income and expenditure account, liability side of balance sheet और asset side of balance sheet. Since it is a regular income, आपको पता है कि दो तरह के इनकम होते हैं, एक रेगुलर इनकम होता है और एक रेगुलर इनकम होता है. वी कैन ऑल्सो कॉल इट, एक रेवेन्यू रिसीट होता है और एक कैपिटल रिसीट होता है. तो रेवेन्यू रिसीट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं एंड सब्सक्रिप्शन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट. तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो ये वाला जो ऑप्शन आपका सेकंड वाला है, दिस इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ओपनिंग प्राइस फंड इज 120, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000, इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इज 38,000, प्राइस अवॉर्डेड इज 88,000. तो बच्चे इसमें आपको बताना द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग प्राइस फंड विल बी. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये बेसिकली एक स्पेसिफिक फंड के ऊपर क्वेश्चन है, जहां फंड में आपने सीखा होगा कि स्पेसिफिक फंड शुड बी इन द ऑफ द कैपिटल नेचर. इसमें जितने भी इनकम रिलेटेड होते हैं दैट्स नीड टू बी एडेड, और जो भी हम फंड एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, वो इसमें से माइनस कर लेंगे. तो हमारे पास जो ओपनिंग फंड है, सो ओपनिंग फंड इज 1,20,000. इसमें हमने जो बेसिकली हमें मिला है इनकम फ्रॉम प्राइस फंड, ये जो इनकम इससे रिलेटेड फंड से है, सो दैट शुड बी 38,000. सो दिस नीड टू बी एडेड. और जो एक्सपेंस है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो एक्सपेंस ऑफ शुड बी 18,000. तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. इसको जो वैल्यू आएगा 120 प्लस 38 158 माइनस 18,000. सो ये आंसर आपका 1,40,000 का आंसर आएगा. सो ये 140 का जो आंसर है ये बी वाले पार्ट में आपका आंसर है. So the answer is 1,40,000. Moving to the next question. Next question is A and B are partners sharing profit equally. A drew 400 in the beginning of every month for 6 months. Ended 30th September 2021. Interest on drawings at the rate of 5% per annum for a period of 6 months will be. तो देखिए कि इसमें जो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4,000 पर मंथ है. So it should be मल्टीप्लाइड विद 6, तो ये 24,000 हाफ ईयरली हो गया. रेट इज गिवन 5%. और आपको पता है टाइम के लिए आप डिफरेंट फॉर्मूले यूज करते हो, लेकिन इसमें एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है n+1/2. डोंट गेट कंफ्यूज. n का मतलब जो होता है, n हियर रेफर्स टू द नंबर ऑफ मंथ्स. तो बेसिकली आपको पता है कि बुक्स हाफ ईयरली क्लोज हो रही है, तो 6 + 1/2, सो दिस शुड बी फॉर 3.5 मंथ्स के लिए. इजीली है कैलकुलेशन है, बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए अगेन वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100. दिस फॉर्मूला नीड टू बी अप्लाइड. सो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100. सो द फॉर्मूला इज 24,000, रेट इज 5% and time period is 3.5/12. So this should be 350. So ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों? ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेंट एक्सपेंसेस ऑफ अ नॉन profit organization paid in advance. Which of the following is the correct classification of rent? रेंट आपने एडवांस में पे करा है. हियर इट इज मेंशन दैट आपने रेंट जो पे करा है वो क्या करा? एडवांस रेंट पे करा है. सो एडवांस रेंट जब भी आप पे करते हो इट बिकम्स एन एसेट्स. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट.
Now moving to the next question. In the case of operating cycle cannot be determined, then the time period of operating cycle is assumed to be. जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो इसका assume जो टाइम होता है वो 12 months का होता है. So option B is correct. Here you can write 12 months. Moving to the next. Shyam and Ram are partners. They do not have any partnership agreement. Shyam spends. तो आपको पता है this is a condition of partnership deed when the partner's deed is not mentioned. इसके ऊपर definitely question आएगा. तो partner's deed जब question silent होता है तो आप क्या करते हो? सैलरी नहीं देते हो. सैलरी आप नहीं देते हो. तो इस कंडीशन में भी श्याम जो है वो टाइम एक्स्ट्रा डिवोट कर रहा है देन राम, बट ही इज क्लेमिंग फॉर द सैलरी सिंस इट इज नॉट देयर इन द पार्टनरशिप डीड, इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, सो श्याम विल नॉट बी एंटाइटल्ड एनी काइंड ऑफ सैलरी. तो इसमें जो भी आपके पास है ये देख लीजिए, श्याम इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी, सो डी ऑप्शन इज क्वाइट करेक्ट. डी ऑप्शन इज, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Bank overdraft and cash and credit in the following in the balance sheet of a company are shown under. So basically इसमें bank overdraft and cash and credit falls under the category of short term borrowings. So ये जो option आपका A वाला option है, this is correct, short term borrowings. Moving to the next. S and R are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital as on 31st March 2021 were 2 lakh. Each, where interest is allowed at the rate of 5%. On balancing in capital, the firm earned net profit of 4 lakh. So बहुत सिंपल सा कंडीशन है, आपने घबराना नहीं है कि 31st मार्च गिवन है तो हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, वी नीड टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल, देन वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्योंकि क्लोजिंग जो ईयर है 31st मार्च 2022 है, तो 31st मार्च 2021 और 1st अप्रैल 2021 वुड बी द सेम थिंग. सो ये आपका ओपनिंग कैपिटल है. अब आपके पास नेट प्रॉफिट कितने की है? 4 लाख रुपीस की है. सो बेसिकली जब भी आप बनाए तो एक सिंपल सा ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमारा बन गया. पीएनएल अप्रोप्रिएशन में वैसे जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं. तो यहां आपने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं. तो ये 4 लाख रुपीस आपने लिख दिया. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने एस को और आर को दोनों देना है. इनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी है बच्चों? इनकी फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख की है. सो 2 लाख का 5% 10,000 आपको एस को देना है और 10,000 आर को देना है. सो कंबाइनली इट शुड बी 20,000. सो 4 लाख माइनस 20,000 दैट इज 3,80,000 इज अवेलेबल फॉर द पार्टनर्स टू डिस्ट्रीब्यूट. सो दिस इज कॉल्ड द डिविजिबल प्रॉफिट. यही आपका डिविजिबल प्रॉफिट है. सो आंसर बी इज करेक्ट. Next one, if the firm is dissolved due to the completion of a particular venture for which it was created, in the case of first, dissolution by notice, second, dissolution by agreement, third, compulsory dissolution, and fourth, dissolution on happening of certain contingencies. So D option is correct. Option D is correct. Moving to the next. A Limited purchase of the value of 190 from B Limited. So basically यहाँ आप देख रहे हो कि 1,90,000 का हमने परचेज करा और हमने इशू कितना करा? 2,000 डिवेंचर्स इशू करे एट द रेट ऑफ ₹100 ईच. एंड डिस्काउंट भी यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है 5% का. तो जब आप इशू करते हो, परचेज करते हो, तो एंट्री क्या करते हो आप? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. तो हियर द वेंडर इज बी लिमिटेड. तो आपने सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर में बी लिमिटेड लिख दिया होगा 190. जब आप इसकी पेमेंट करोगे थ्रू द डिवेंचर्स, तो द एंट्री शुड बी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर्स. सो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000 इंटू 95 से. वाई? बिकॉज डिवेंचर की जो एक वर्थ है वो 100 रुपीज की है एंड देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 5%. सो बेसिकली दिस द वैल्यू वुड बी 95 रुपीज. तो यहां आप एंट्री क्या करने वाले हो? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट discount on debentures account debit to 10% debentures account. So basically यहाँ आप 2,000 into 95, that will give you the exact value of B Limited. 2,000 into 5 the amount of discount and 2,000 into 100 the value of
10% debentures. So B Limited account should be debited with 1,90,000. Discount on debentures account should be debited by 10,000 to 10% debentures account. तो basically ये जो fulfill कर रहा है कौन सा ऑप्शन, ये वाला. अच्छा, B Limited इसमें नहीं है, ये वाला ऑप्शन fulfill कर रहा है. Just a minute. B Limited account 190, discount on issued debenture. Okay. By mistake यहाँ A Limited है, लेकिन हमने परचेज किससे करा है, B Limited से. So this is not the correct answer. The option A is correct. B Limited का डेबिट होना है. So B Limited account should be debited with 190. Discount on issued debenture account should be debited with 10,000 to 10% debentures, that is of 2 lakh. So option number A is correct. Moving to the next. Claims are expected to be settled beyond 12 months or an operating cycle is classified as under. 12 months or an operating cycle is classified as current liabilities. So option D is correct. Moving to the next. Bonus and leave encashment will be shown under dash head in statement of profit and loss account. जब भी आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो बोनस एंड लीव इनकैशमेंट है, दिस कम्स अंडर द एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस. सो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन dash of the Partnership Act 1932, the dissolution of partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of the firm. Option A 49, 39, 29 and 19. So this is as per section 39 of the Indian Partnership Act 1932. So isme B option is correct. So basically the section is 39 of the Indian Partnership Act 1932. Moving to the next. After dissolution of partnership firm, the firm dash A continues, comes to an end, comes in new form, definitely comes to an end. Dissolution का मतलब होता है discontinuation or termination of the partnership. So basically the firm got closed. So the B option is quite correct. Moving to the next. Profit and loss are to be said in dash irrespective of their capital contribution in their agreed ratio. आप सोचोगे equally होगा, नहीं होगा. Agreed ratio होगा, because ratio must be defined there. Ratio नहीं defined है when there is a partnership deed, and if the partnership deed is silent, then only equally. Otherwise, agreed ratio. So आपको option select करना है, ये B वाला. This is agreed ratio. Moving to the next. Issue of debenture by a company for payment of asset purchase is known as issue of debenture for cash. B as a collateral security. C for consideration other than cash. D for purchase of assets. So basically this is considered as issue of debentures in consideration, for consideration other than cash. So yes, option number C is correct. This option is correct. Moving to the next. Suman, Smita and Savita are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:2:3. As per the partnership deed, Suman is entitled to a commission of 10% on net profit after charging such commission. The net profit before charging commission is 2,20,000. The amount of commission payable to Suman is. बच्चों आप लोगों ने दो फॉर्मूले देखे होंगे calculating the commission. First formula is net profit into rate of commission upon 100. So this is being used when the before charging is given or the question is silent. Just the question is mentioning that we need to calculate the commission for the partner, but before or after is not mentioned. So by default we assume कि before charging है. After charging में क्या formula use करते हैं? Net profit into rate of commission upon 100 plus rate of commission. तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ आपके पास जो गिवन है इंफॉर्मेशन वो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग का गिवन है. तो फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं आप? वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 2 लाख and the value is 2,20,000. The value is 2,20,000. So this is 2,20,000 into 10 upon 100 plus 10. So this should be 20,000. This will be 20,000. So B option is correct. Next one. R Limited acquired assets of 20 lakh and took over creditors of 2 lakh from Kalpana Enterprises. R Limited issued 9% debenture of 100 each at par as a purchase consideration.
द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन वुड बी। तो बेसिकली जब भी हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं या किसी बिजनेस को अक्वायर करते हैं, सो बेसिकली यहाँ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने बिजनेस अक्वायर करा है। तो बिजनेस जब आप एक्वायर करते हो तो किस चीज के लिए पे करते हो आप? नेटवर्थ के लिए पे करते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द नेटवर्थ? नेटवर्थ जितना आपने एसेट्स परचेज करा है, जितना आपने एसेट अक्वायर करा है, आई मीन एसेट्स एक्वायर करा है माइनस द लायबिलिटीज। तो सन्ड्री एसेट्स आपने कितने का अक्वायर करा है? आप देख सकते हैं कि सन्ड्री एसेट्स हमने एक्वायर करा है 20 लाख का, और हमने लायबिलिटीज भी कितना टेक ओवर कर लिया? 2 लाख का। सो इसका मतलब है कि हम कितना पेमेंट करने वाले हैं? 18 लाख रुपीज पेमेंट करने वाले हैं। सो यस, द ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, if the firm is dissolved in accordance with a contract between the partners, it is the case of dissolution by notice, dissolution by agreement, compulsory dissolution, और dissolution on happening of certain contingencies। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है आपका dissolution on happening of certain contingencies, D option is correct। Moving to the next, this is the question: in which of the following cases at the suit of a partner the court may order a partnership firm to be dissolved? When a partner commits breach of agreement, yes. When a partner is guilty of misconduct, yes, this is also one of the reason. When any partner become insane, okay, all three reasons, तो ये D वाला जो part होगा वो होगा, क्योंकि ये 3 reasons हैं जिसमें commits breach of agreement, guilty of misconduct and became insane. These are the reasons. So all of the above. So I would like to select D. आपका आंसर D correct है। Moving to the next, Motu, Patlu and Chingam are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. Motu retires from the firm and it is decided that profit sharing ratio between Patlu and Chingam is 5:3. What will be the gaining ratio? तो gaining ratio के लिए मैंने आपको बताया था, हम ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, सॉन्ग वाला। So while calculating gaining ratio, G for gaining, the formula is new minus old. So here I can apply the formula, same formula, that is gaining ratio equals to new minus old. So now the new ratio of P is 5/8 and the old ratio is 3/9. And C is having the new ratio of 3/8 and having the old ratio of 2/9. Just simplify this. So here we are going to simplify this. So 9 5s are 45 and 3 8s are 24. So yes, 21 upon 72. Here we are going to find the LCM, that is 72. 9 3s are 27, 8 2s are 16. So yes, this is 11/72. So P and C is having 21:11. So this is the gaining ratio between P and C. So yes, option number B, this option is correct. I hope you understand. Moving to the next. Next question is, in case of partnership, the act of any partner is binding on all partners, binding on that partner only, none of the above, binding on all partner except that particular partner. Yes, binding on all partners. So yes, A option is correct. Moving to the next. A company liquid assets are rupees 10 lakh. Okay. Its current liabilities are rupees 8 lakh. Subsequently, it purchased goods for rupees 1 lakh. बहुत सिंपल है बच्चों, आपके पास करंट रेशियो गिवन है। सो करंट रेशियो इक्वल्स टू व्हाट? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें चेंजेस क्या होगा? 10 लाख का ऑलरेडी करंट एसेट्स है आपके पास, करंट लायबिलिटीज आपके पास ऑलरेडी है 8 लाख का। ड्यू टू द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बेसिकली जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो दे आर 2 फैक्टर अफेक्टिंग। फर्स्ट, इन्वेंट्री बढ़ जाता है। सो इन्वेंट्री इज अ गुड कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट्स, सो इट शुड बी एडेड हियर। तो ये 1 लाख जो हमने खरीदा है, दिस नीड टू बी एडेड हियर। सिंस वी बॉट दिस ऑन क्रेडिट, तो हमारी करंट लायबिलिटीज आई मीन क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा। सो 11 लाख डिवाइड बाय 9 लाख, 11 लाख डिवाइड बाय 9 लाख इफ यू डू, तो ये आपका ऑप्शन 1.11:1 ये कैलकुलेट करके आएगा। सो यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट. A company issued 1,011% debentures of 100 each for 5 years at 100 on maturity. This is the case of, okay. So देखो आपने जो डिवेंचर इशू करा है वो कितने में करा है? 100 पे। 100 का मतलब क्या होता है? दिस इज द फेस वैल्यू, दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स।
जैसे डिवेंचर्स की हम जब बात करते हैं, इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो डिवेंचर का फेस वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं हम, 100 रुपीज. सो 100 ईच फॉर 5 years, रिडीमेबल एट 100 ऑन मेच्योरिटी. मतलब तो ये क्या हो गया, इशूड एट पार हो गया एंड रिडीमेबल एट पार हो गया. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हेन इशूड एट पार, दिस कंडीशन you are fulfilling, issued at par and redeemable at par. Moving to the next. On retirement of a partner, balance sheet book value of land and building is 2 lakh. It is decided to depreciate land and building at 15%. Market price of land and building is rupees 25 lakh. At what price of land and building will be shown in the balance sheet prepared after retirement of a partner? Right? So it's really simple to understand that we are having a value. So we are having a value of, so here there is a mistake. This is the value of 20 lakh. There is a value of 20 lakh. Land and building is having a value of 20 lakh. And 20 lakh is the value. And there is a depreciation of 15% of 20 lakh. So basically 20 lakh minus 15% of 20 lakh, that is 3 lakh. So now it is being recorded at a price of 17 lakh in the new balance sheet. So yes, this option is correct. Option number C is correct. Moving to the next question, 17th. Activities that result in changes in the size and composition of the owner's capital and borrowing of the enterprises dash activities. Again I repeat, activities that result in changes in the size and composition of owner's capital and borrowings. तो आपने पढ़ा होगा कि financing activities जो होता है, it is related with the internal and external source of finance. So here internal means the owner's capital and external means the borrowings. So yes, the answer would be B, the financing activities. So this would be the correct answer. B would be the correct answer. Moving to the 28th question. Poonam, Dhammu and Aditya were partners, sharing profit and losses in the ratio of 8:6:2. Dhammu retires and gives her share of profit to Poonam for rupees 7,200 and Aditya for rupees 6,000. The gaining ratio of Aditya and Poonam will be, it's really simple. See, D is retiring. D is retiring. ठीक है? और D is retiring and D ने P को basically 7,200 rupees benefit offer करा है. ठीक है, और इसने आदित्य को 6,000. तो इसी का हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आपका गेनिंग रेशियो हो गया. जितना इसने डी ने प्रोवाइड करा है तो डेफिनेटली पी शुड बी गेनिंग विद दैट वैल्यू, और जितना ए को प्रोवाइड करा ही शुड बी गेनिंग विद दैट वैल्यू. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो दिस शुड बी 12 6 एंड 12 5. तो इसका जो गेनिंग रेशियो होगा दैट शुड बी 6:5. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो ये वाला ऑप्शन डी वाला जो करेक्ट है, ये वाला वैल्यू आपका करेक्ट हो जाएगा. Moving to the next. Next question is quite simple. A, B and C are partners in the capital, in the profit and loss in the ratio of 10:6:4. C retires and his capital balance after adjustment regarding reserves, accumulated profits, losses and gain or losses, revaluation was 3,50,000. C was paid 4 lakh in full settlement after D was admitted for 1/4 share. What amount D will bring as goodwill premium? So it's really simple. आप ये देखो कि on the basis of the retiring partner we can easily consider C is a retiring partner and C is having a ratio of 4/20. So how to calculate the goodwill? See, his total benefit comes out to be like 3,50,000. So it means after, sum of the total value of accumulated profits and reserves and subtracting the value of accumulated losses, adding again the value of revaluation profit and revaluation losses, this entire capital comes out to be like 350. लेकिन फर्म ने कितना उसको पे करा है 4 लाख. So this is the actual payment to be made, but this payment is made against this. So the difference between two is the goodwill of, this is the goodwill of C. So this is called C's share of goodwill. This is C's share of goodwill. Okay. So now on the basis of this, how can we calculate? So 50,000. So basically the firm's goodwill, we can calculate it from here only. So firm's goodwill is, we can take the help of C's share of profit and loss. So basically his share was 4/10. So for 4/10,
I'm sorry, 4 by 20. This is 4 by 20. I'm so sorry, 4 by 20. So for 4 by 20, he is having a goodwill of 50,000. So now what is the goodwill of the firm? So goodwill of the firm is 50,000 into 20 upon 4. So that should be 2.5 lakh. 2,50,000. Now on the basis of the firm's valued goodwill, we can compare the D share of goodwill. D since coming for 1/4, so D share of goodwill would be that should be 1/4 of, so the answer should be 62,500. This is the share of goodwill brought in by D for admission of in the firm. So C option, this option is correct. Next question. A company issued 7,500 10% debenture of 100 each for 10 years are shown in the balance sheet of the company under the head. Is it current liabilities? Is it non-current liabilities? Is it reserve and surplus, or is it share capital? See, debenture is a good example of non-current liabilities. Debenture is a good example of non-current liabilities. It comes under the long-term borrowings, which is a subheading of non-current liabilities. So yes, the option B, this option is correct. B option is correct. Moving to the next. Liquid ratio is equal to liquid assets divided by. Liquid ratio का formula क्या होता है बेटा? Liquid ratio का formula होता है liquid assets upon current liabilities. So basically option B is correct. Right? Now the next question is, pick the odd one out. Reserve fund, employees provident fund, investment fluctuation fund, and workmen. So these all are reserves. I mean A, C and D. This is a liabilities. So employees provident fund is in odd and odd. So answer is B. Moving to the next. Quick ratio is also known as, of course it is a liquid ratio. Option is A. 34. What is the limit of securities premium on the issue of shares? Is it 6%? Is it 10%? Is it 20% or no limit? So as per the section 52 subsection 1 of the Companies Act 2013, actually made in the year 1956, revised in the year 2013. So there is no limit. There is no limit of imposing the securities premium reserve. So it should be no limit. Next question is, in case of private placement of shares to raise the amount of capital of a company, first option invites the public through prospectus, does not invite the public. Okay, so this is the option correct. B option is correct. It doesn't invite any to the public. So B option is correct. Moving to the 36th question. A building was purchased for 9 lakh and payment was made by shares of rupees 100 each at 20% premium. Securities premium reserve would be. So it's really simple to understand. So here the value is, we are applying the same formula, number of shares issued, that is total amount payable, that is 9 lakh, upon unit price of share, that is 100, plus securities premium. So 20% of 100, that is 20 rupees. After deducting this, the value comes down to 9 lakh upon 120. So, and it should be multiplied with 2. It should be multiplied, with 20, because in order to understand the securities premium reserve. So 9 lakh divided by 120 into 20. So it's really simple. 9 lakh, just calculate it. 120 into 20. Why 20? Because we need to calculate the securities premium reserve ka value. So this should be 7.5 times. So this should be 1 lakh and 50,000, sorry. 1,50,000 is the right answer. So 9 lakh simply divided by 120 will give you the number of shares. And if it is multiplied with 20, because 20 rupees per unit we are charging on account of securities premium reserve. So multiplying with this value, so answer should be this. Why not debited? Because securities premium we are collecting, so always it should be credited. It is a additional capital income for the organization.
So option B is correct. 37. The next question, when a company makes an offer or invites the public in general to subscribe its share, it is known as, यह सब आपको पता होगा, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, issue of shares at a premium, issue of shares at par, and initial public offer. So yes, this is initial public offer. All right. So moving to the next question, cash deposited with the bank with a maturity date after 2 months belongs to which of the following while preparing the cash flow statement? So basically this comes under the cash and cash equivalence. So this option is correct. C option is correct. This comes under the cash and cash equivalent. Anything which is related with cash or bank comes under the cash and cash equivalent. Moving to the next. What will be the inflow of cash from sale of assets when we are having an office equipment of 60,000? When we are having a closing balance of 1 lakh and depreciation is 7,000. But again, purchase of equipment of rupees 10,000 and we are selling a part of asset for rupees at a profit of 6,000. So here we need to prepare an account. तो इसका आपको account बनाने की जरूरत है. So you are going to prepare the account of office equipment account. So this is the credit side and this is the debit side. Now office equipment is an assets, agreed? So the increasing side is the debit side and decreasing side is the credit side. So what can we put in the debit side? Whatever things increase the value of your office equipment should be kept into the debit side, like opening balance, like purchases, like profit. This will increase the value of your assets. Similarly, in order to decline, depreciation, sale, loss and closing balance should be here in the credit side. So first of all, I like to start with the opening balance, that is 1 lakh. So I can write here 2 balance brought down and the amount should be 1 lakh. Definitely closing balance of 60,000, closing balance of this amount should be kept into this side. Depreciation of 7,000 should be here in the declining side. And we bought another office equipment worth rupees 10,000. So here I can put to bank account. So this is 10,000. Now it is given that we have sold at a profit of 6,000, right? So here we can write to statement of profit and loss account because profit should be here. To statement of profit and loss account. So just make the total of this. So this is 1,16,000. Here also 1,16,000. So the difference between two is the sale of office equipment. So 1,16,000 minus 67,000 would be the right answer. So yes, the right answer should be 49,000. So the option B is correct. All right. Now moving to the next question. Interest on calls in arrear is charged according to the table F. Yes, as per the table F of the Companies Act 2013, interest on calls should be calculated at the rate of 10%. And calls in advance होगा तो क्या करेंगे? 12% per annum. So yes, this is option number B, 10% per annum. Moving to option number, question number 41. So these are the information we need to carefully consider. Amit, Babu and Charu set up a partnership on this. So these are the three partners, right? Their capital contribution was 50, 40 and 30 respectively. इसी से सारे आंसर निकल जाएंगे आपके. मेन इंफॉर्मेशन आप मार्क कर लीजिए. Their profit and loss ratio was 3:2:1. Amit is to get a salary of 1,000 per month. Yes, salary of 1,000. तो इससे पूछा जा सकता है कि आप ईयरली कितना करेंगे या आप हाफ ईयरली कितना करेंगे. तो ये भी आपको कंसिडर करना है. And next is Babu, a commission of 5,000. So commission we don't have to calculate. They have already given you the value, right? उसके interest is to be allowed on capital at the rate of 6% per annum, and interest on drawings is given, so we don't have to calculate. Let's see the question. Now Amit's salary debited to profit and loss appropriation account. So yes, 12,000. Why? Because Amit is getting 1,000 per month. So annually he is getting
this salary. All right. Moving to the next option. Commission of Babu will be debited to. Whenever the commission is being provided to a partner, so it should be recorded into the debit side of your P&L appropriation account. So yes, D option is correct. Total interest on capital debited to profit and loss appropriation account. पहले आपने मार्क कर लिया होगा कि इसमें there are three partner, A, B and C were the three partner. They are having a capital of 50,000. They are having a capital of 50, 40 and 30 respectively. So combinedly it should be 1,20,000 क्योंकि इन्होंने total interest on capital पूछा है. And the rate of interest on capital charging is 6%. So this should be 7,200 is the annual interest on capital supposed to be given to the partners. So yes, the option B is correct. This is the next question. Journal entries for allowing interest on capital. Whenever we provide the interest on capital to the partners, so what journal entry will you pass for the same? So the entry should be interest on capital account debit to partners capital account if there is a fluctuating method, if we are following the fluctuating method, or interest on capital to partners current account if we are following with the fixed method. So yes, option number A is correct. Moving to the next 45th question. Journal entries for charging interest on drawings to partners capital account. Is it interest on drawings to partners capital account? No. Is it interest on drawings to P&L appropriation account? Again, no. So basically, partners capital oblique current account debit to interest on drawings account. C option is correct. Now again, one para we have to read. So we have to read carefully and mark the important component in order to answer this kind of question. This question is very precious और आप जब भी important point होगा उसको अपने लिए mark कर लीजिए. Sambhavi Limited was incorporated on 1st April 2017 with a registered office in Mumbai. The capital clause of Memorandum of Association reflected a registered capital of 8 lakh, equity shares of 10 each and 1000 preference shares. Okay, तो हमने ये information अपने reference के लिए mark कर लिया. Next one is, since some large investment were required for building and machinery, the company in consultation with vendor Messrs VPS Enterprises, ये issue of shares in consideration other than cash, issued 1 lakh equity shares of and 20,000 preference shares at par to them in full settlement, in full consideration of assets acquired. Beside this, the company issued 2 lakh equity shares for cash at par. We need to remember कि हमने 1 लाख issue of shares in consideration other than cash भी करा है. इसके अलावे हमने 2 लाख और equity shares issue कर दिया to the general public. This is issue of shares in consideration other than cash, 1 lakh. And this is the shares when issued to the general public. We are charging 3 rupees on application, 2 rupees on allotment, 3 rupees on first call and 2 rupees on second and final call. Okay, so till date second call has not yet been made. Okay, second and final call we haven't done of rupees 2. And Mr. Vijay, who did not pay the allotment and call on his 300 shares, and Mr. Vipul, who did not pay the first call. Okay, so we need to consider this कि Mr. Vijay, who is holding 300 shares, did not pay for allotment and first call, and the final call has not yet been made. Next one is Mr. Vipul, the another one who did not pay for 200 shares on first call. Shares of Mr. Vijay were then forfeited and out of them 100 shares were issued. Okay, so mind the gap. हमने forfeit कितने करे थे? 300 Mr. Vijay के forfeit करे थे और हम reissue कितने करने वाले हैं? 100 reissue करने वाले हैं और कितने पे कर रहे हैं? 12 रुपीस का करने वाले हैं. तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या क्या है. अब ध्यान में रखना है आपको कि हमने फाइनल कॉल 2 रुपए का नहीं करा है. सो 1 शेयर इज कॉस्टिंग हियर फॉर ₹10, आउट ऑफ विच द फाइनल कॉल हैज नॉट येट बीन मेड. तो इसका मतलब है जो कॉल्ड अप वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो कितना हो गया? 10 minus 2. So the called up value of per share is 8. So everything is being calculated with the value of 8. चलिए अब देखते हैं. Shares issued to the vendor of building and machinery Mr. VPS Enterprise would be classified as issue of shares in consideration other than cash. ये हमने बात कर ली थी. Next,
How many equity shares of the company have been subscribed? This is a very good question. This is a very good question. देखो, आपने VPS लिमिटेड को कितना दिया था? 1 लाख शेयर्स दिए थे, अग्रीड? ठीक है, उसके बाद आपके कितने शेयर्स हैं टोटल जो आपने जनरल पब्लिक को रहा? 2 लाख। इसमें से 2 लाख में से बेसिकली आपको मिस्टर विजय ने 300 शेयर्स ही फेल्ड टू पे फॉर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, और मिस्टर विपुल ने 200 शेयर्स। तो इसका मतलब है जो क्लियर पेमेंट हमारे को आ गई है वो अदर देन दिस, दैट इज 1,95,000 एंड 1,99,500, 1,99,500। लेकिन मिस्टर विजय के जो 300 शेयर्स हैं इसमें से हमने 100 शेयर्स को और रीइश्यू कर दिया है। सो अनरीइश्यूड शेयर्स कितने हैं? 200 हैं, इनको कंसिडर नहीं करेंगे। मिस्टर विपुल के शेयर को हमने फोरफिट अभी तक नहीं करा है। तो अब जब काउंट करेंगे आप तो क्या क्या करेंगे, ये देखिए 1 लाख, 1,99,500 जिसके ऊपर क्लियर पेमेंट हमें मिल चुका है। मिस्टर विजय के हमने 100 शेयर्स भी रीइश्यू कर दिए हैं, तो ये भी 100 शेयर्स आ गया पार्ट में, और मिस्टर विपुल के 200, इसको आप कंसिडर करोगे तो दिस शुड बी 2,99,800 शेयर्स। सिर्फ अनरीइश्यूड शेयर्स को आप कंसिडर नहीं करते हो, जिसको अभी तक आपने रीइश्यू नहीं करा है। सो यस, द आंसर सी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, what is the amount of securities premium reflected in the balance sheet at the end of the year? Very good question. आपने शेयर्स कितने इशू करे हैं? आपने शेयर्स इशू करे हैं 100। मिस्टर विजय के आपने 100 शेयर्स इशू करे हैं। उस 100 की कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी? हमने बात करी थी, उसकी कॉल्ड अप वैल्यू थी 8 रुपीज। कैसे? एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज की है एंड द फाइनल कॉल हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। इसका मतलब 10 - 2 8 रुपीज की वैल्यू हो गई। अब 8 रुपीज का जो शेयर था उसके लिए हमने कितने में इश्यू करा? उसको 12 रुपीज में करा था। तो क्लियरली वी आर अर्निंग 4 रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और कितने शेयर्स के लिए हमने अर्न करा है ये? तो विजय के 100 शेयर्स हैं और हमने 4 रुपीज के हिसाब से अर्न करा है। तो 4 रुपीज कैसे आया ये देखिए ध्यान से। तो वी आर गेटिंग 12 हियर, बट द कॉल्ड अप वैल्यू वाज ओनली 8, सो दैट्स हाउ 4 रुपीज। सो 100 into 4 will give you how much? 400 rupees. So this comes under the securities premium reserve. So yes, the option number C is correct. तो बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, what amount of share forfeiture would be reflected in the balance sheet? तो बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं कि इसमें हमने दो लोगों का शेयर जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, मिस्टर विजय, क्लियरली समझने के लिए, एंड मिस्टर विपुल। तो बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिस्टर विपुल, व्हाई? बिकॉज हिज शेयर वर नॉट forfeited, right? Mr. Vijay is having 300 shares, out of which 100 shares are reissued. तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि इसका हम ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर चुके होंगे। So now we have only the availability on 200 and this is the unreissued shares. And you know that Mr. Vijay has only paid for application. He didn't pay for even allotment. And at the time of application, we are charging 3. So it means he has paid only 600 rupees. So yes, the option A is correct. Now moving to the last question. What is the limit of securities premium on the issue of shares? There is no limit. As per the section 52 subsection 1 of the Companies Act 2013, there is no limit of charging securities premium reserve. So yes, the option D is correct. सो अगेन बच्चों हमने एक नया सैम्पल पेपर इसको डिस्कस करा, इसको आप अच्छे से ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस करे हैं। एंड माय बेस्ट विशेस विथ यू, हैप्पी लर्निंग, ऑलवेज लर्न करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहिए और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बेस्ट विशेस।